हेलो दोस्तों, मैं विमल कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलते हैं हम अपने फैक्ट पर। क्या आप जानते हैं मच्छर करीब 20 करोड़ साल पहले धरती पर आए थे? जी, 20 करोड़ साल पहले। ज़्यादातर कंट्रियों के अंदर आपने मच्छर देखे ही होंगे। क्या आप जानते हैं कि आइसलैंड पूरे विश्व में केवल एक ऐसा देश है जहां पर मच्छर नहीं पाए जाते? यदि मच्छर को खून ना मिले तो वह बच्चे पैदा नहीं कर सकते। मच्छरों के बारे में आपको एक और कमाल क्या बताता हूँ कि मादा मच्छर की उम्र लगभग 2 महीने की होती है, लेकिन नर मच्छर की उम्र केवल 15 दिन की होती है। यदि आपके किसी अंग पर मच्छर बैठा हो और यदि आप उसे मारना चाहें तो आप उस हिस्से को टाइट कर लीजिए, मच्छर उड़ नहीं पाएगा। जो लोग ज़्यादा केला खाते हैं मच्छर उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। आप लोगों को पता है कि मच्छरों को कौन से ब्लड ग्रुप का ब्लड सबसे ज़्यादा पसंद आता है? मच्छरों को ओ ब्लड ग्रुप के लोगों का खून ज़्यादा पसंद आता है। यदि किसी इंसान पर 12 लाख मच्छर एक साथ काटें तो वह उस इंसान का पूरा खून चूस सकते हैं। मच्छर अपने जन्म स्थान से 1 मील के एरिया में ही उड़ते हैं। एक मादा मच्छर एक साथ 300 अंडे देती है और अपने पूरे जीवन काल में 500 अंडे पैदा कर सकती है। यदि पूरी पृथ्वी के मच्छरों को किसी फुटबॉल के मैदान में रख दिया जाए तो उनकी ऊंचाई लगभग 5 किलोमीटर तक हो जाएगी। मच्छरों के 6 पैर और 4 दांत होते हैं। मच्छरों की सूंघने की शक्ति काफी अच्छी होती है। यह 75 फीट की दूरी से भी कार्बन डाइऑक्साइड सूंघ लेते हैं। मच्छर अपने वजन से 3 गुना ज्यादा खून चूस सकते हैं। जब कभी मच्छर खून के लिए ज्यादा उतावले हो जाती हैं तो वह कपड़ों में भी काटने लगते हैं। Mosquitoes, the world's deadliest animal. They're so good at the sneak attack and the stealthy escape. How do they do it? Using several slow-motion cameras, researchers have learned that mosquitoes have an amazing and unusual takeoff technique. With a full payload of blood in their bellies, before they ever even take off, they start flapping their wings. They flap super fast, giving them most of the force they need to push off our skin. But it needs to be a covert operation. They can't push off too hard or we'll detect them and counterattack. The researchers compared mosquitoes with fruit flies. Both insects flew away at about the same speed. But the mosquito uses a secret weapon for its getaway: its long legs, which allow it to push off very slowly and gently, only using a quarter of the leg force that the fruit fly uses. The bloodthirsty mosquito. By the time we notice its attack, it's long gone. The culprits are these guys, sandflies. In the same way that mosquitoes transmit malaria, these sandflies spread the leishmaniasis parasite. The Liverpool School of Tropical Medicine is at the forefront of research into this disease. Scientist Dr. Rod Dillon shows me how it's transmitted. I've got some nice hungry ones here for you, George. Oh, that's nice. Okay. But don't worry, these sandflies don't contain the leishmaniasis parasite. They normally drink nectar, but before they lay eggs, the females need a protein meal, and my blood is going to provide that. That's interesting, because I can't feel anything. Which is surprising, as the sandfly is drinking at a rate equivalent to us drinking 70 pints of thick, syrupy liquid in just 30 seconds. To do this, it's injecting a substance which brings the blood up to the surface of the skin. There's a redness appearing around your skin around those. There's a little those tiny bit of mouth- red, but I still can't feel anything at all. This is due to the sandfly's second lethal trick. It injects an anesthetic which gives it time to finish its meal in peace before it gets swiped away. Well, I might end up with a couple of small itchy lumps, but they won't do me any harm. Sandflies are only dangerous when they carry the real cause of leishmaniasis, a microorganism called a protozoan, which is invisible to the human eye. The protozoa lie in the gut of the infected sandfly, biding their time until their host chooses its next victim. As they wait, they make a jelly-like substance which forces the sandfly to regurgitate a glob of parasites into the wound of its next blood meal.
The body responds to the invading protozoa, causing the characteristic sores of leishmaniasis. Some forms of the disease can be fatal, and even the treatment is quite severe. It involves a 21-day stay in hospital on an IV drip. It can have quite severe effects on the pancreas, the heart, make you very nauseous. So the best thing we can all do is avoid getting bitten in the first place. Insect repellents, long sleeve clothing, and sleeping under nets at night can all reduce that risk. It's unlikely we'll ever rid the world of this disease, but by taking simple precautions when we go on holiday, hopefully we can avoid contracting it.